सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत के इलाके वांडा शेख में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई कामयाब कार्रवाई के नतीजे में 8 खारिज हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 24 अक्टूबर की कार्रवाई में 8 खारिज हलाक और 5 शदीद जख्मी हुए। फोर्सेस की निहायत अस्करी महारत से की गई कार्रवाई में खारिज को फरार होने का मौका ही न मिल सका। जी हाँ, इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन जारी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खारजी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई कामयाब कार्रवाई के नतीजे में 8 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 24 अक्टूबर की कार्रवाई में 8 खवारिज हलाक और 5 शदीद जख्मी हुए। फोर्सेस की निहायत अस्करी महारत से की गई कार्रवाई में खवारिज को फरार होने का कोई मौका न मिल सका। इलाके में मुमकिन दहशत गर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन जारी है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खारजी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ये अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई कामयाब कार्रवाई के नतीजे में 8 खवारिज हलाक किए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 24 अक्टूबर की कार्रवाई में 8 खवारिज हलाक और 5 शदीद जख्मी हुए। फोर्सेस की निहायत अस्करी महारत से की गई कार्रवाई में खारिज को फरार होने का मौका ही न मिल सका। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन जारी है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खारजी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई कामयाब कार्रवाई के नतीजे में 8 खारिज हलाक हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 24 अक्टूबर की कार्रवाई में 8 खारिज हलाक और 5 शदीद जख्मी हुए। फोर्सेस की निहायत अस्करी महारत से की गई कार्रवाई में खारिज को फरार होने का मौका न मिल सका। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन जारी है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खारजी के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई कामयाब कार्रवाई के नतीजे में 8 खारिज हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 24 अक्टूबर को कार्रवाई में 8 खारिज हलाक और 5 शदीद जख्मी हुए। फोर्सेस की निहायत अस्करी महारत से की गई कार्रवाई में खारिज को फरार होने का मौका न मिल सका। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन जारी है। जी हाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतरी वज़ीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान कतर ताल्लुकात के मस्बत समत पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम शराकतदार और बाअसर इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को बढ़ाने पर अहमियत पर जोर दिया गया। शेख फैसल बिन सानी का कतरी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रबत को मज़ीद गहरा करने के आज़म का इयादा भी किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतरी वज़ीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान कतर ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। सोहेल आफरीदी को बानी पीटीआई से मिलने देना चाहिए। मुलाकात हो जाए तो मुल्क का नुकसान या क़यामत नहीं आ जाएगी, गवर्नर पंजाब का कहना है। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का कारकुन एक दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मसाइल के हल के लिए सियासी जिरगा बनाए। और इनके साथ भी ये थी कि हमें चाहिए कि हम एक सूबे का जिरगा बनाएं, पार्लिमानी जिरगा बनाएं, हम वफाक के साथ जाएं, वफाक से बातचीत करें। हमने दलील और दलाइल के साथ बात करके अपने हकूक़ लेने हैं। हमने किसी भी बदमाशी के साथ या किसी और उसके साथ अपने लिए हमारे पास फोरम्स मौजूद हैं। पंजाब में जैसे आपने बात की कि हमारी पार्टी की और PMLN की आपस में जो है वो हार्ड टॉक्स हुई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिलावल साहब के साथ एक कमिटमेंट की थी कि मैं जल्द इन चीज़ों को रिव्यू करके और 1 महीने के अंदर अपना आपको दोबारा इसको रिव्यू करेंगे, जिसमें CC में भी यही बात हुई कि हम 1 महीने के बाद दोबारा CC की मीटिंग बुलाएंगे और उसमें हम देखेंगे हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो हुई हैं, क्या क्या नहीं हुई। 26 नवंबर एहतजाज केस अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म। अलीमा खान के बैंक अकाउंट भी फ्रीज करने का अहकामात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अलीमा खान के ज़ामिन उमर शरीफ की जायदाद जब्त करने का भी हुक्म। अदालत ने कहा, अलीमा खान हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत पेश नहीं होती। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म।
ATC लाहौर ने मरियम नवाज को नैब ऑफिस पर पथराव के मुकदमे से बरी कर दिया। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा खारिज करने की इस्तदा मंजूर। प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया मरियम नवाज समेत दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जामात साबित नहीं हुए। मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल के लिए शवाहिद मौजूद नहीं हैं। ATC लाहौर ने मरियम नवाज को नैब ऑफिस पर पथराव के मुकदमे से बरी कर दिया। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा खारिज करने की इस्तदा मंजूर। अमरीकी दबाव काम करने लगा। चीन ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। जराये के मुताबिक मॉस्को की तेल की 2 बड़ी कंपनियों पर पाबंदी के बाद चीनी सरकारी कंपनीज ने रूस से तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। इससे पहले भारत की रिफाइनरी भी रूसी तेल की दरामद में कमी पर आमादगी जाहिर कर चुकी है। अमरीकी दबाव काम करने लगा। चीन ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी है। जराये के मुताबिक मॉस्को की तेल की 2 बड़ी कंपनियों पर पाबंदी के बाद चीनी सरमायाकारी कंपनीज ने रूस से तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। वज़ीर आज़म खिताब कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल ECO, ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ डेलीगेशन फ्रॉम फ्रेंडली एंड ब्रदरली कंट्रीज, एक्सलेंसीज, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून। On behalf of the government of Pakistan and the people of Pakistan, I would like to extend a very warm welcome to all of you and thank you for taking time from your very precious busy schedule to grace this occasion in Islamabad. Indeed, it's a very significant moment that we have gathered here today to have a very meaningful and productive dialogue at this point in time as to how to further strengthen our bilateral and multilateral relations in various walks of life. Ladies and gentlemen, for centuries, our land, Pakistan, which was carved out of subcontinent back in 1947 through great efforts and sacrifices by the Muslims of the subcontinent under the great leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan. We have all heard those glorious stories of Pakistan being a great channel, conduit, through which scores of countries exchange goods, cultural traditions, and creative ideas. From the ancient Silk Route to today's Belt and Road Initiative, our region has always been a conduit and a channel of great opportunities. Today, shifting global geopolitical dynamics and the growing dominance of economic priorities have breathed new life into the ancient corridor, transforming it from a relic of the past into a strategic necessity for our future. Excellencies, our geography links the warm waters of the Arabian Sea and the Persian Gulf, traversing the majestic Karakoram and Himalayan range and flowing through the timeless Indus Valley. We are at the confluence of China, the
Eurasian land bridge, and the Middle East, a unique tri-junction of economic corridors connecting China, Central Asia, and the broader Middle East. Pakistan's long coastline also makes our ports of Gwadar and in future many other potential ports on this coastline, including Karachi, as key transit points on the maritime Silk Road. Honorable delegates, as I speak in this August Assembly of our brotherly and friendly delegates, sharing my thoughts with you on this important topic, I am aptly reminded of the vision and foresight of my leader, Prime Minister Muhammad Nawaz Sharif, who staunchly believed that peace and development are intertwined. One of his earliest initiatives after assuming power back in June 2013 was the signing of the China-Pakistan Economic Corridor, the flagship project of President Xi Jinping's Belt and Road Initiative. Therefore, CPEC has been a transformative experience for this region, connecting markets, bringing people together across China, Central Asia, South Asia, and the Middle East. By linking Gwadar port with China's Xinjiang province, it has opened new routes for trade and energy cooperation, serving as a vital gateway of connectivity, opportunity, and of course, cultural exchanges. Ladies and gentlemen, I take huge pleasure and honor in informing this distinguished audience that after the success of its first phase, we are now entering into the second and very exciting phase of CPEC 2.0, centered and based on fostering business-to-business partnerships, strengthening investment opportunities for Chinese companies in Pakistan, as well as from friendly and brotherly countries sitting on this round table, so that we can promote our mutual targets in peace and prosperity. Ladies and gentlemen, we are also working on a number of rail connectivity projects like the Trans-Afghan Railways and the Islamabad-Tehran-Istanbul connectivity. And I have already discussed this project with my very dear brother, President Tayyip Erdogan, and my very dear brother, President Masoud Pezeshkian of Turkey and Iran, respectively. And this opportunity is a great opportunity to revolutionize cross-border trade and connectivity. Also, ladies and gentlemen, enhanced air links to Central Asian countries, along with frameworks such as the TIR Convention and international road transport mechanisms, would really bring a great quantum jump in our trade, our joint venture investments, projects, and of course, people-to-people contacts, which will go a long way
in bringing our countries together like never before. Ladies and gentlemen, I am confident that these mega projects would synergize the economic strengths of regional countries and usher in a new era of enhanced trade, economic cooperation, and energy collaboration in the region and, of course, beyond. Excellencies, in today's digital age, connectivity is not just limited to roads, railways, and air links. It is all about data, innovation, research and development, and technological integration. Pakistan is investing in digital infrastructure to ensure that we are adequately equipped to catch up with the fourth industrial revolution around the globe. And having a huge youth bulge in Pakistan, our demographic situation is a challenge as well as an opportunity in Chinese parlance. 60% of our population spans between 15 years to 30 years. So it's a huge challenge and also brings a huge opportunity. If we are able to provide ample opportunities to our youthful boys and girls in the field of IT, AI, vocational training, that will be our greatest asset. We don't have black gold, but we have our youth as our greatest asset, which will become the harbinger of Pakistan's speedy progress and prosperity in time to come. Ladies and gentlemen, it cannot be stressed enough that cooperation in the trade and economic spheres is a win-win proposition, offering rich dividends to all. This would strengthen our common stake in peace and reinforce efforts for development in the region. In conclusion, let me mention in all humility, but with fullest certainty at my command, that together we would sow the seed of cooperation so that we may harvest the fruits of development and prosperity for our people and the region beyond. May Allah Almighty give us the guidance and strength to work together very closely and move in unison in future to make this region and regions beyond our borders, which will carry the program of prosperity and progress for all time to come. Thank you very much. God bless us. Thank you, Honorable Prime Minister, for your inspiring words and for your continued support in promoting regional cooperation and connectivity across our shared transport corridors. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, as we conclude now, there is going to be a group picture to commemorate this successful conference. May I request all ministers and heads of delegations and development partners to please join the Honorable Prime Minister and the Honorable Minister of Communications for a group picture. All the ministers, heads of delegations and heads of development partners, please join the Honorable Prime Minister of Pakistan, Mr. Muhammad Shahbaz Sharif, and Honorable
Minister of Communications, Mr. Abdul Aleem Khan, for a group picture. रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 वज़ीर आज़म खिताब कर रहे थे। अब ग्रुप फोटो हो रही है। वज़ीर आज़म कहते हैं इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा।